Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Snober ma'am. Hope you are all well. Today I am going to teach you housing and clothing. Lesson number 3 for class 3rd. Dear students, do you know where we live in? We live in houses. Why do we need a house? We need a house to protect ourselves from heat, cold, rain, winds, etc. Suppose you are playing in a playground or park with your friends. Suddenly it starts raining. What do you do and your friends do then? They all rush towards their houses to protect themselves from rain. सपोज अगर आप और आपके दोस्त पार्क या मैदान में खेल रहे हैं तो अचानक तेज बारिश होने लगी तो आप खुद को बचाने के लिए क्या करोगे? तो आप सब बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों की तरफ दौड़ोगे क्योंकि घर हमें बारिश से बचाएगा. सो आवर हाउस इज आवर शेल्टर. इट इज आवर बेसिक नीड. जो मकान है ये हमारी प्रोटेक्शन है, पनाहगाह है, जहाँ पे हम खुद को महफूज पाते हैं. ये हमारी बुनियाद है. People build different types of houses such as pakka house, kacha house, igloo, etc. Here arises question, what materials are used for building a house? We all know that people make houses according to their needs and affordability. Usually materials that are available nearby are used to make a house. ये हम सब जानते हैं कि लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपना मकान बनाते हैं. जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगे वैसे वो अपना मकान तैयार करेंगे. For example, houses in the cities are mostly built with bricks, cement, iron and marble. These houses are strong and last for hundreds of years. They are called pakka houses. शहरों में मकानात वो ईंट, सीमेंट, आयरन, मार्बल से बनाते हैं. Houses in villages are not as strong as the houses in the cities. People in villages make their houses using straws, mud, hay and stones. These houses do not last for a long time. They are called kacha houses. गांव के जो मकान होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं जितने शहरों में होते हैं. गांव के लोग ये मकानात सूखी घास, मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं. ये उतने मजबूत नहीं होते जितने शहरों के मकानात होते हैं. In cold regions, people make houses using slabs of ice. These houses give them all comforts that we get in our houses. Such houses are called igloos. People living in igloos are called Eskimos. सरद इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अपने मकानों को बर्फ से बनाते हैं. इन मकानों में वो आराम से रहते हैं जैसे हम अपने घरों में रहते हैं. जो लोग इन इग्लूज में रहते हैं उनको एस्किमोस कहते हैं. Japan is another place where earthquakes occur very often. They used light materials for building houses. जापान एक जगह है जहां अक्सर जलजला आता रहता है. वहां के लोग अपना मकान लाइट मटेरियल से बनाते हैं. Places where floods usually occur have stilt houses. For example, Assam in India. आसाम वो जगह है जहां अक्सर सैलाब आता है. वहां के लोग स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं. This is all for today. Thank you.